Hi, my name is Shyam Dangwal and welcome to Physics for Cause. In this particular presentation, we are going to discuss about types of speed. Till now, we have discussed what actually is speed in the previous presentation. So let's begin with the very first topic of today's presentation is types of speed. If we are going to talk about the physics and individually the mechanics, the branch of the physics on which we are going to deal, there are four types of speed. Number one type is uniform speed. Uniform speed. Second one is about just contrast to the first one, non-uniform speed. Third one is average speed. And the fourth one is about the instantaneous speed. Instantaneous speed. Among these topics, average speed plays a very important role in our daily life applications. So let us begin with the very first topic, that is our uniform speed. So make sure that you are making the notes out of this particular presentation. Uniform speed. What exactly is uniform speed? It means that when an object covers equal distance, object covers an equal distance in equal interval of time. In equal interval of time, then the speed is known as uniform speed. Uniform speed. Let us consider an object. Let us suppose if there is a runner. This is a person who is running. He covers equal distance in equal interval of time. He covers 15 kilometer. Let us suppose 15 kilometer in 1 hour, then another 15 kilometer in another 1 hour, then another 15 kilometer in another 1 hour. So here you can see that there is equal distance, equal distance, equal distance, equal distance, and similarly equal distance here as well. And the time period you are seeing is same. If I would consider here 0 hours, so what is the gap between this? 1 hour. What is the gap between this? 1 hour. What is the gap between this? 1 hour. So here you can say that there is equal time interval. So this is what a uniform speed is. So this is an example of a uniform speed. If I would write, if a runner moves, let us suppose 15 kilometer in every hour, then the speed of runner is uniform. And what exactly is this speed? Speed is equal to distance upon time. So here distance is 15 kilometer and time here is 1 hour. So therefore the speed of the runner would be 15 kilometer per hour. So I hope that you got the point of uniform speed. So now our next topic of concern is about the non-uniform speed. ठीक इसी के opposite ये होता है. So let us begin with the very first topic, non-uniform speed. If we are going to talk about the non-uniform speed, then this speed is also termed as variable speed in terms of mechanics. इसे हम variable speed के नाम से भी जानते हैं. What exactly is this? An object is said to be in non-uniform speed if it covers equal distances in unequal interval of time, or I would say that unequal distance in equal interval of time. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा. कोई एक ऑब्जेक्ट को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में तब कह सकते हैं अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल टाइम में. इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अनइक्वल
interval of time. This would be case number 1. And second case would be unequal distance with the equal interval of time. Equal interval of time. For example, if I'm going to talk about that runner, जो runner है, the distance is same. 15 kilometer he's covering, 15 kilometer he's covering, and 15 kilometer he's covering, but the unequal interval of time. Suppose 15 किलोमीटर उसने कवर किया 1 आवर में, 15 किलोमीटर फिर नेक्स्ट उसने किया 3 आवर में, एंड 15 किलोमीटर उसने कवर किया 7 आवर में. So here you can examine that the distance is equal, but the time intervals are unequal. So this is the case of non-uniform speed. The second one case of the non-uniform speed is unequal distance in equal interval of time. Let us consider an example of the same runner who is running unequal distance for 15 kilometer, then he covers 16 kilometer, then he covers 12 kilometer in equal interval of time. First suppose एक घंटे में उसने 15 किलोमीटर किया, नेक्स्ट एक घंटे में 16 किलोमीटर किया, अगले नेक्स्ट एक घंटे में उसने 12 किलोमीटर कवर किया. So here you can see that the distances are unequal. Here you can easily see 15, 16 and 12, and you can easily distinguish the time as well. The time interval is equal. So this is an example of a non-uniform speed, or I would say variable speed, when we are going to talk about in the portion of the mechanics. The third one is about average speed, and I have already told in the starting of this presentation that the average speed plays a very significant role in determining the position of an object. So average speed is considered to be as the constant speed with which the object covers the same distance in given time as it does while moving with variable speed during the given time. Or I can say that it is defined as the ratio of length of the path traveled and the corresponding time interval अच्छा, एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड इज सिंपली व्हाट कि टोटल कितना पाथ ट्रेवल्ड हुआ है. एवरेज स्पीड इज सिंपली व्हाट इज द टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस, कुछ भी कह सकते हैं, बट उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग कितना टाइम इंटरवल लगा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड. और ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है. This is what actually is speed is equal to distance upon time. ये सेम फॉर्मूला है. स्पीड यहाँ पर एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस यहाँ पे पाथ ट्रेवल्ड है या पाथ लेंथ है, और टाइम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल है. बट जो लिखने का प्रोसेस है वो अलग है एवरेज स्पीड में, बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद एवरेज डिस्टेंस एंड एवरेज टाइम इंटरवल, or I would say path length and corresponding time interval. Let us say for an example of for this particular average speed, suppose if there is a runner or an athlete covers 100 kilometer, he is covering 100 kilometer, the path length is 100 kilometer, and he covers this distance in 5 hours, then its average speed would be is equal to what? So average speed is equal to distance upon time. So here the distance is about 100 kilometer, and time is about 5 hours. So I would simply divide this 100 by 5. I would got 20 kilometer per hour. In some of the books you might see that 20 kilometer hour inverse. Actually it is the same. I have discussed it pretty before in the previous presentation.
So this is what is the average speed of runner. Average speed of runner. So I hope that you must have understood the concept of average speed. Average speed does not depend कि वो पर्सन की पेस क्या है. व्हाट इज द पेस ऑफ द रनर. हो सकता है उसने 5 घंटे के ड्यूरेशन में पहले 1 घंटा कहीं पे आराम किया, नेक्स्ट 1 घंटा कुछ और किया, अगले 3 घंटे में उसने 100 किलोमीटर कवर कर दिया. हो सकता है, बट वी आर कंसिडरिंग द एवरेज मीन्स हमको टोटल डिस्टेंस एंड द टोटल टाइम टेकन या कोरेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल लेना होगा. So this is the concept of average speed. Now let us talk the last type of speed, that is instantaneous speed. Instantaneous speed. Instantaneous speed is what? The speed of an object. Speed of an object at an instant of time. At instant of time is called instantaneous speed. Instantaneous speed. What if delta x? I will be going to discuss this particular thing later. If delta x is the distance traveled in time interval delta t, then instantaneous speed is equal to what? So instantaneous speed, if I'm going to denote it with v, then it will be equal to delta x by delta t. अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर डेल्टा शब्द क्या है. जो ये ट्राइंगल्स आपको दिख रहा है, व्हाट एक्चुअली इज इट. सबसे पहले उसको जानने से पहले हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन में गो थ्रू करना होगा. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, that speed is termed as instantaneous speed. For example, you are driving your scooter or bike. Okay, so जो वहां पर स्पीडोमीटर रहता है, स्पीडोमीटर, let us say it is a digital speedometer. स्पीडोमीटर दो तरीके के होते हैं जो स्पीड को मेजर करते हैं. एक होता है एनालॉग स्पीडोमीटर और एक होता है डिजिटल स्पीडोमीटर. एनालॉग स्पीडोमीटर क्या होता है? जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक नीडल रहती है और यहाँ पर इस तरीके से लिखा रहता है 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड अप टू व्हाटएवर द मार्क वुड बी देयर. और जहां पर नीडल की पोजीशन जाती है तो हम बोल सकते हैं, सपोज ये 45 पे है, लेट उड से इट वुड बी एट 45. तो 40 और 50 के बिटवीन में जो पोजीशन है वो है 45. तो हम कह सकते हैं 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अभी आपके स्कूटर या बाइक ने अटेन करी है. अगर हम डिजिटल स्पीडोमीटर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर तो सिंपली डिजिटल आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर. सो एक्चुअली अगर टाइम हो रहा है सपोज 3:30 और आप 3:30 पे स्कूटी रन कर रहे हैं और आपकी स्पीड सपोज 45 किलोमीटर है और किसी ने आपको पूछा व्हाट इज द स्पीड, तो आप बोलोगे 45 किलोमीटर पर आवर. और ये है आपका इंस्टेंट टाइम, यानी कि किसी ने अचानक से पूछ लिया टाइम में कि आपकी स्पीड क्या है. तो जिस अचानक से टाइम पे आप उसको अपनी स्पीड बताओगे वो स्पीड भी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी. इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी. सपोज 4:15 पे आपके फ्रेंड आपके पीछे को पैसेंजर है या को राइडर है, उसने आपको पूछा ब्रो व्हाट्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल. तो 4:15 पे आप अपने स्पीडोमीटर में देखेंगे तो हो सकता है आपकी स्पीड सपोज 65 की स्पीड में चल रही है, 65 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम के लिए आप इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिटरमाइन कर रहे हैं. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होती है जिसमें आपका जो डिस्टेंस होगा उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वो कम होगा
और टाइम का ड्यूरेशन भी कम है, क्योंकि 4:15 मतलब 4:15 का मतलब है एग्जैक्टली एट 4:15। ओके, सो जो डिस्टेंस है, अभी हमने ऊपर बात करी है ये ट्राइंगल जैसे सिंबल की, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा ये क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स स्मॉल क्वांटिटी। और अगर मैंने डेल्टा एक्स, एक्स यहाँ क्या था? डिस्टेंस, एक्स के साथ ये लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? स्मॉल डिस्टेंस। टाइम के साथ अगर मैंने लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? स्मॉल टाइम इंटरवल। और हमको पता है स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और जिसको हम स्मॉल v से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स और यहाँ पर टाइम हो जाएगा डेल्टा टी। सो v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। दिस इज एन formula for the instantaneous speed. So I hope that आपको 4 टाइप्स ऑफ स्पीड समझ में आए होंगे। नंबर 1 इज यूनिफॉर्म स्पीड, जहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और आई वुड से वेरिएबल स्पीड, जहां पर ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, or the second case would be unequal distance in equal interval of time. The third type of speed is average speed, which is denoted as the path length upon corresponding time interval. And the fourth one is about the instantaneous speed, when an object attain a speed, whatever the speed it would attain at an instant of time. मैंने जो टाइम बोला है उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की क्या पर्टिकुलर स्पीड है, दैट टर्म इज रेफर्ड टू एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, सो दिस इज द types of speed which we have discussed in this particular presentation. In the next presentation, we will be going to discuss about the velocity and types of velocity. So thanks a lot for watching this particular video.